Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you? Fine, ma'am. Can you give me your introduction, your name? Yes, ma'am. Ma'am, my name is Hitash, and ma'am, I live in Sector 43, Faridabad. I study in Modern Delhi International School, and I am 11 years old in 6th grade. Okay, good, great. Um, and I have heard this name first time. What is the meaning of this name? Ma'am, it Very is, nice. ma'am, Hitash meaning is luminous in Greek. Luminous Greek. Good. Why in Greek only? Luminous is everywhere. Ma'am, actually, your voice is a bit blur. I cannot hear. Blur. Some background noise is there. Is it Ma'am, no, ma'am, actually, no background voice is not there. hmm. It's just like coming a little, not like, Come? That means slow. yeah, ma'am, yeah. Okay. Now is it okay? Yes, ma'am. Okay. Okay. So what is your school name? And my school name is Modern Delhi International School. Okay. Good. And have you taken this Olympiad success first time or you have already taken it earlier? Ma'am, actually, I took a demo yesterday Uh-huh. uh, of English. English. Okay. So earlier you have not taken any class. No, ma'am. Okay. And what about you have already entered in class 6, right? Yes, ma'am. Some of the classes have been done in your school or after vacation it will be first time. No, ma'am. Actually, science exam is also done in the class. In which class? Ma'am, UT1 exam. UT1 done. That means unit Yes, tests are ma'am, already done. not whole UT1, but 5 subjects are done in UT1. Okay. And what are the chapters covered in science in Ma'am, UT1? ma'am, in biology, it is the uh, ma'am, our book name is Curiosity. Ma'am, in bio, it is we have done the wonderful world of science. And ma'am, in chemistry, there was language of chemistry, which was not in book. It was just coming from the assignments given from school. And ma'am, Hmm. in physics, we have done measurement of length and distances. Okay. Okay, good. Now what you want, I should teach you in all English or mix of English or Hindi? Ma'am, you can teach in English or Hindi as you want. Both. Okay. Yes. Okay. Okay. So let's see. So today we are going to start with a chapter that is your method of separation in everyday life. Okay. So let me share you. Ma'am, it is from which part of the subject? This is from the science. That means your book only. That is Curiosity, Yes, and ma'am. it is. I think it is given as a ninth chapter. Ma'am, I was asking like biochemistry or physics. This is a part of chemistry, but right now you people are in sixth class. So are you making separate books for in science and for biochemistry, physics? Do you make like that? No, ma'am, it is a one combined book in which Do you make there is separate copies for bio, physics, chemistry? yes, ma'am. Hmm. Register, right? Yes, ma'am. And did your teacher, there are different teachers for every chapter or only one teacher teaches you? Ma'am, no, there is different teacher for every subject. Okay. No, not on for all subjects. I'm asking only about this Yeah, ma'am, science. I was just that only in biochemistry and physics there are different teachers. Okay, good. That's okay. So this is a part of a chemistry or not of physics, not of bio. Okay. Now just see what, look at the following pictures. Now can you tell me what we are doing in these pictures? I mean, first one, we are like separating the. Hmm. You can use Hindi also if you want to tell. This is just a discussion kind of chat. What you Ma'am, we are separating chai patti from like the strainer, and ma'am, in yes. second one, Hmm. we are just Hmm. removing the
matter from the like cover of the. Yes, correct. Okay. So that means in the first part we are doing tea being strained. That means you आप chai patti छानते हो, right? Tea leaves that you separate from the tea, and in the second you are separating the peas, right? Now what we are doing in these pictures? Ma'am, first one we are breaking the egg and putting it in a like anything like a plate or a bowl. And ma'am, in second one, and we are making different bins for every like plastic and paper for different Hmm, materials. hmm. Right, correct. So that means in the first part you are separating Yes, that ma'am. yolk. Okay, the yellow part that is called your yolk, you are separating this from the eggshell, right? And in the second, you are separating the waste, right? Now, can you see in all these four pictures what is common thing? What common thing we are doing in all these things? What is one common thing that we are doing in all these actions? Here you have separated tea leaves from tea. Here you Yes. have separated peas from the its cover. In the third, you are separating yolk from Actually, the we are shell, like and in separating the fourth, something. you are separating. Yes, so you are separating or you are sorting the things from Yes, the ma'am. mixed mixture, right? Something mixture is given, and you are separating some part of it that you want, right? So the common thing in each action will be your separation, right? Now, can you tell me why we need separation? Why separation is needed? Can you tell me any real life example in which you have done separation? Ma'am, like we can not like we can not drink chai without straining like Hmm. the chai Hmm. patti and Any ma'am any other kind of we separation can you have done? ma'am we cannot eat a raw egg with the shell. Hmm. These are the four examples that I have given. Now, give me any example that you know in which you do separation. Any example. So think about your kitchen, your school, anything in which you do separation, in which you separate the things. Think. Hmm. Actually, Okay, okay. Now, let us learn today. Now, separation, why we need separation? When you want to remove the unwanted things. Some mixture is given to you and you want some part of it and remaining you want to remove. For example, your garlic cloves, in which you remove the uh, outside layer and you take the inside part of it. Similarly, some of the cereals or grains are there and you want to remove some part of it. Now, banana cover. banana cover. Okay. Any other thing in which some mixture is given and you are removing? Some same type of things are given to you and you are removing some part based on the color also. Ma'am, ma'am like tomato cover also. Hmm. Okay. Do you eat chilies? Do No, you eat red chilies, green chilies? no, So no. suppose your mom gives you some poha or any sabzi. Do you remove the green chilies that are put on it? Do you eat like that? क्या आप हरी मिर्ची लाल मिर्ची काली मिर्ची ऐसे देख के हटाते हो? नहीं Yes, ma'am. खा लेते हो कि कभी No, no. हटाते हो नहीं ये तो बहुत तीखा है इसमें हटा से ये देता हटा दो हटा देता हटा देते हो so what you are doing so that means you are doing separation right Yes. so this is all separation when we remove the unwanted things कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए उसे Separating हमें separate sand करना from है water. then correct this is very good example so how you separate sand from water how you Ma'am, do it it is already ma'am, mixed by sand is already sedimentation, ma'am, by very sedimentation. good, very good. Sedimentation, correct. So sedimentation is one of the process, one of the technique to do uh, Decantation and this filtration. separation.
Decantation, correct. Decantation, filtering. So that means you know everything. That what are the different techniques. Today we will learn these things only. That what are the different separation methods like hand picking, winnowing, threshing, sieving, evaporation, decantation, segmentation, sedimentation. You have already told me. Magnetic separation, loading, filtration. What are these different types of separation? We will understand that. Okay. Okay, now this is your hand picking. You gave me an example that you remove the chilies or red black pepper from the food. That is a kind of hand picking. आपको वही याद रखना है कि जब हम hand से कोई भी impurities या फिर कोई ऐसा substance that you don't need, when you remove that, then it is called hand picking. अब वो unwanted material क्या हो सकता है? It can be weed, wheat straw, wheat leaves, ladybug, some chaff, grains. कई बार हम देखते हैं कि हमारे जब हम दुकान से कुछ सामान लेकर आते हैं तो उसमें ये अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये दाल साफ नहीं है या फिर ये राइस में बहुत कीड़े हैं या फिर किसी ग्रेन्स में बहुत ज्यादा छिलके हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं उन्हें सेपरेट करते हैं Yes, व्हेन यू आर एबल टू डू इट विथ योर हैंड मतलब अगर वो क्वांटिटी बहुत कम है आप उसे आराम से अपने हाथ से निकाल सकते हो देन वी यूज दिस मेथड दैट इज कॉल्ड हैंड पिकिंग. Okay, the separation technique in which substances in a mixture can be separated just by picking them up is by hand. This is called your hand picking. तो आप directly सीधा hand picking. बहुत easy है याद करना by name. You can easily identify कि हमें हाथ से remove करना है और वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए कि हम उसे निकाल नहीं पाए. राइट थोड़ी सी क्वांटिटी है उसे सेपरेट आप देख सकते हो आराम से उसका कलर चेंज है देन यू कैन यूज दिस मेथड. ओके मान लो उसमें बहुत ज्यादा है तो हम उसे डिफरेंट मेथड यूज करेंगे एंड इट इज यूज्ड व्हेन इट इज हैविंग सॉलिड. मान लो ये लिक्विड होता तो हम लिक्विड टू लिक्विड में चेंज नहीं कर पाते देन दैट मीन्स वी आर सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम अ सॉलिड. सॉलिड लिक्विड गैस तो आप समझते हो yes, है ना. तो व्हेन वी आर रिमूविंग द सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर देन इट इज नोन एज हैंड. ओके दिस मेथड इज क्लियर. yes, ma'am. Okay, now the second method is your sedimentation and decantation. आपने देखा होगा कि आपके घर में मम्मा कई बार दाल गलाती है या चावल गलाती है या कोई भी पल्सेस हैं उसे गला के रखती है उससे क्या होता है. Ma'am, ma'am, like the impurities get separated. हाँ. Ma'am, the इसमें क्या होता है फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेडिमेंटेशन. जब भी हम अपने पल्सेस राइस को हम पानी में गला के रखते हैं दैट बिकम्स हैवी. ओके तो जो दाल और चावल होते हैं वो हैवी होने की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और सारी जो इम्प्योरिटीज इंसेक्ट्स हैं स्ट्रॉ हैं टाइनी पीसेस हैं और लाइटर इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर फ्लोट करने लगती है. ठीक है तो सारा दाल हो गया नीचे सारी इम्प्योरिटीज हो गई ऊपर. अब वो फ्लोट कर रही है पानी में. जब आप उसे स्ट्रेन करोगे साइड से निकालोगे तो नीचे तो उसे दाल ऐसे दाल रह करके जाएगी separate कर चावल रह सकते जाएगा. हैं. यस उसे सेपरेट कर सकते हैं. तो हमें एक काइंड ऑफ प्योर दाल और राइस और सीरियल्स हमें मिल जाते हैं और सारी इम्प्योरिटीज क्या होती है बाहर निकल जाती है. तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सेपरेशन. सेडिमेंटेशन क्या पार्ट हुआ जब आपका हैवी मटेरियल नीचे सेटल डाउन हो जाता है. Okay, Yes, that is called sedimentation. But when we remove the water impurities and that impurities poured out or discarded, that is called decantation. Just understand the difference. When it is settled down, that is called sedimentation. But when we are removing the impurities, that is called decantation. Okay, can you give me any example in which you have done sedimentation and decantation apart from this rice and uh, cereals? ma'am. Can you think? Hmm. Sand in water and Very good. Sand and water is good example in which what happens when you put water in the sand gets settled down and you remove water from it. Okay, yes, good. ma'am. Yes.
In chai patti and chai also you can do. If you do not have the sieve, then what you do, you just let the tea leaves to settle down, and then you can remove the liquid and you can pour it on in the cup. But some Yeah. of the impurities, some of the tea leaves can go from here and there. It is not proper way, but you can do it if you settle down the tea leaves, if you let it sit, and then you can pour. Yeah. Okay. Okay. So in the sedimentation, what we do, it is the process by which whenever there is a question in which some heavy impurities are there in the liquid, that heavy impurities let the settle down and bottom in the bottom and in the container in the mixture, and the lighter will go up. Okay, that remain to float. Now the solid which deposit, that means the solid that we are getting inside is known as your sediments. What is settling down? Okay, what is settling down, that is called your sediments. Sediments. Okay, and the liquid that you are having, this liquid above, that is known as your supernatant. Supernatant. Okay, the liquid that is remaining is known as your supernatant. Okay. Permanent. Okay, and what is decantation? When you remove the water. Okay, when you remove the water and separate the impurities from the water, that is called your sedimentation. After sedimentation, okay, what you are left with, that is called your decantation. Clear? For example, rices, pulses used at home are washed by this method. This method is clear or not? This is very easy. Hmm? Yes. Okay, next. Now, next is your sieving. Can you tell me any in which you have done this sieving? Ma'am, actually, I have heard it first time. Okay, just think about your real life. Real life examples are there. What is sieving? Sieving means छानना. Okay, sieving means, sieve is your छन्नी, sieving means छानना. ठीक है, हम क्या क्या छानते हैं? आपने अपनी मम्मा को क्या देखा है छानते हुए? इस टाइप की एक्टिविटी मम्मा करती है? मैम, मैंने सिर्फ चाय को ही देखा है, चाय पत्ती और वो वाला। अच्छा, मम्मा खाना बनाती है, आटा लगाती है? हम आटा मारते हैं, आटा मारने से पहले वो क्या करती है मम्मा? मैम, देखा नहीं है। अच्छा, आज मम्मी रोटी बनाए तो देखना मम्मा क्या करती है. ओके, तो सबसे पहले मम्मा क्या करती है, उस आटे को छानती है. ओके, क्यों छानती है? उसमें जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसमें हो सकता है उसमें भी थोड़े बहुत कीड़े हों, तो वो छन जाते हैं. ठीक है, ऊपर मोटा मोटा पार्ट रह जाता है, और नीचे जैसे इसमें केक बना रहे हैं तो मैदा छान रहे हैं, तो नीचे क्या होता है, फिल्टर्ड बहुत पाउडर्ड मैदा आ जाता है, और ऊपर मोटा मोटा पार्ट हट जाता है. मैम, राइट. नीचे क्लियर साफ. छोटा छोटा होता है जो। हाँ, राइट. जो छोटा छोटा आटा है, पतला आटा है, वो नीचे आ गया, और जो ब्रान है, जिसे हम ब्रान कहते हैं, मोटा मोटा छिलके वाला, वो पार्ट आपके छन्नी के ऊपर हो जाता है. सेम वे जैसे आपने चाय और छन्नी वाला देखा, तो ऊपर चाय पत्ती रह जाती है, नीचे चाय आ जाती है. राइट. सो दैट इज कॉल्ड योर सीविंग मेथड. इसमें भी हम डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के सीव्स यूज कर सकते हैं उसको छानने के लिए. ना बताओ कि अगर इस छन्नी का क्या रोल है? क्या मैं इसकी जगह मोटी छन्नी ले लूं जिसमें बहुत ज्यादा छेद हैं बड़े बड़े, क्या वो यूजफुल होगा? मैम, जो मैम जिसके लिए यूज कर रहे हैं मैम, वो मोटे मोटे पार्ट रह जाए मैम, वो भी साथ में निकल जाएंगे। मैम, वो भी साथ में ही निकल जाएंगे ना फिर। राइट. तो हमारे जो पोर्स हैं, जो छेद हैं, तो हमें किस तरह की छन्नी यूज करनी चाहिए? किस तरीके का सीव मैम, यूज करना चाहिए जिसमें हमें? छोटे छोटे वो होल्स हो। राइट. तो हमें सीव उस तरीके से यूज करना चाहिए जो हमें सेपरेट करना है, उसका साइज सीव से बड़ा हो. अगर वो उससे ज्यादा छन्नी उससे बड़ी ले ली, तो वो पार्ट नीचे आ जाएगा. है ना? तो हमें सीव के होल्स इस तरीके से चूज करने हैं कि वो पार्ट हमारे सीव के होल्स इम्प्योरिटीज से छोटे हों. राइट. Okay. Apart from this kitchen, have you seen this type of sieve anywhere else? इस तरह की बड़ी बड़ी छन्नी आपने कहीं और देखी है? किचन के अलावा हमने कहीं यूज करते हो अलग अलग सेपरेट करने के लिए? सोचो सोचो. कहाँ ऐसा हमने यूज किया है?
हैव यू सीन द कंस्ट्रक्शन साइट? आपके घर में कभी काम हुआ है? हुआ है। हाँ, तो अब सोचो वहां पे हमने कभी ऐसे बड़ी छन्नी यूज की है? पता नहीं। लेबर कभी यूज करते हैं? देखा है आपने? कंस्ट्रक्शन होता है, ईंट पत्थर का काम होता है, देन दे यूज दिस टाइप ऑफ सीव। हैव यू सीन नो मैम। दिस टाइप ऑफ सीव दे यूज? ये क्या करते हैं, रे कभी आप ध्यान देना, इस तरीके की सील यूज करते हैं एट द कंस्ट्रक्शन साइट। इसमें क्या होता है, जब हमारे यहाँ रेत आती है तो वो इस टाइप की गंदी रेत हो, और हमें क्या चाहिए, साफ रेत चाहिए जिसमें मोटे मोटे कंकड़ पत्थर नहीं, राइट? तो दे जस्ट पोर दिस सैंड ऑन दिस बिग सील, एंड ये देखो साफ छन्नी, साफ वाली रेत नीचे आ गई, और सारी जो इम्प्योरिटीज है जो हमें नहीं चाहिए वो हम सेपरेट कर देते हैं। इसमें बिग स्टोन्स भी हो सकते हैं, पेबल्स हो सकते हैं, कोई भी गंदगी हो सकती है जो हमें नहीं चाहिए, राइट? सो इस तरीके के बिग सीव्स जिसमें होल, अब इसको अगर हम आटे वाली छन्नी ले लेंगे तो हमारा काम तो बहुत देर में होगा, है ना? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मोटी सीव लेनी पड़ेगी जिसमें होल्स थोड़े बड़े। यस। Okay, so this is called sieving when you use in the construction site. Okay, now sieving in the construction is used to separate stones and pebbles from sand. The stones and pebbles remain on the top of the sieve and sand particles pass through the holes of the sieve. Clear? यस मैम। Okay. तो हमने कौन कौन से मेथड्स अभी पढ़े? फर्स्ट मेथड इज Sieving, sedimentation, decantation, and and hand picking. hand picking. Suppose your mom is making poha. Okay. Now she just take some poha and pour some water in it. Okay. So which type of method it is? And then she removed all the water from it, and the leftover poha she made. What type of method it is? Sedimentation and decantation. Very nice. Okay. Now, suppose there are some pulses which are mixed together. Okay, some not pulses. Suppose there are some kaju kishmish in a bowl. Okay, and you want to eat only kishmish from it. Then what type of separation it is? Hand picking. Very good. Yes. Now next method is called your threshing. Threshing. Have you ever heard how we take Ma'am, out these actually, grains and ma'am, stuff? in threshing and winnowing, I studied in fifth. Like Fifth. in Okay. first unit, I don't remember it now, but I have heard threshing and winnowing. Okay. So what happened? Do you remember what happened in threshing and winnowing? Mhm. Ma'am, I think that there is a machine called Hmm. thresher. Ma'am, from Pressure, which we correct. separate the, ma'am, by beating or like we Very nice. separate the stalks and Very nice. So when we remove the stalk and grains from by beating the stalk on the wooden or any hard surface, then what happens? Stalk gets separated and grains get separated. yes, ma'am. Okay, this process of beating harvested crops, harvested crop means that is already have Yes, grown grains in it, that is called your harvested crops. Now we separate the stalks, that means the outside part, and grains from it, that is called your Ma'am, threshing. isn't Okay, it a bit time now taking? this is how they done threshing. Ma'am, Yes, it is a bit time taking. That's why we shifted to the machine approach. Okay, that's why we thresher, shifted right? to machine approach. Otherwise, it is very thresher. That is called your thresher. Normally, the stalks that is dried up, that is harvested, and this is separated from the stalks and grounded into the flour. But it is very time consuming. So we shifted to the machine part. They are doing threshing also, and then winnowing also. But, apart from threshing, next step is your winnowing. What is your winnowing? What is your winnowing? Winnowing Yes. is like हम्म अभी जब हम थ्रेशिंग करते हैं तब इसमें ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिसमें छिलके भी होते हैं,
right? When you beat this chalk, then it also contains chaff in it. Chaff means जिसमें छिलके भी होते हैं, right? This is called your chaff. मैम This is ग्रेन्स your chaff, right? And this is your grain. When you beat, you have this chaff also outside this grain. Okay, now you need to separate this chaff and this grain part. Now winnowing is that someone stands on a height and then they blow it. Okay, ये ऊपर से नीचे इस तरीके से ग्रेन्स को गिराते हैं. अब क्या होगा बताओ, अगर हम इसे ग्रेन को गिराएंगे तो कैसे साफ होगा ये? मैम बहुत ज्यादा हवा चल रही होगी तो वो अपने आप सेपरेट हो जाएंगे. राइट, तो दैट मीन्स ये टेक्निक हम तभी यूज करते हैं जब वन इज लाइट इन वेट. दैट मीन्स एक का वेट कम हो, एक का वेट ज्यादा हो. मैम So शार्प इज लाइट वेटेड एंड chaff is lightweight. So ग्रेन्स it, आर हैवी वेट. so husk we can call it husk also. So husk gets separate and it blown away with the air, and grain gets separated, it get fall down in at the bottom. Okay, so we separate the grains and the husk. Okay, and this the utensil or the thing that we are using, that is called your soup. That is your bamboo tray. Okay, clear? Have you seen this kind of activity? Have you seen this in your at your home? Your mom does separate the grains. कभी गेहूं साफ करते हुए देखा उन्हें? तो वो घर में तो सूप को ऐसे ऐसे घर में तो ऐसे नहीं ऐसे सूप देखा. को उछालते हैं. नहीं देखा? ओके. अच्छा, ओके. आपने देखा है कभी, आपने मूंगफली खाई है? मूंगफली यस मैम. तो उसमें छिलका आता है, तो कभी आपने देखा है कि कई बार लोग ऐसे ऐसे मूंगफली को ऐसे करते हैं और ऐसे फूंक मार देते हैं, तो छिलका ऊपर उड़ जाता है और सारे दाने दाने हाथ में रह जाते मैम मैंने मैम वो देखा कि मैम जैसे तोड़ के उसको फिर एक एक करके सेपरेट करके खाते हुए देखा है. हैं. हाँ, अब आप क्या करना, कभी मूंगफली लेना और उस मूंगफली को हाथ में ऐसे ऐसे से घिसना. ठीक है, आप घिसोगे तो क्या होगा, उसमें छिलके भी आ जाएंगे मैं और समझ उसमें गया उसके मैम दाने भी आ जैसे मैम जाएंगे. फिर घिसेंगे आप, मैम उसमें थोड़े क्रैक्स आ जाएंगे और फिर थोड़ा हवा से वो उड़ जाएंगे पूरे हाँ, तरीके से. तो वो जब हम फूंक मारेंगे तो सारे छिलके उड़ जाएंगे और हाथ में सिर्फ उसके दाने दाने रह जाएंगे. यस राइट, मैम. तो ये कब हो, ये वाली मेथड हम कब यूज करेंगे? दैट इज योर विनोइंग. मतलब हमें फूंक मार के या हवा से चीजों को सेपरेट करना है. ये तभी कर सकते हैं जब हमारा जो हमें रिमूव करना है वो लाइट पार्टिकल्स है, और जो हमें रखना है दैट मैम इज जो हेवी. हाथ में रखना है वो हेवी. हैवी. ओके, नहीं तो अगर दोनों ही हल्के होंगे तो दोनों उड़ जाएंगे. यस मैम. है ना? तो हमें किस तरीके से यूज करना है? हम दैट दोनों मीन्स भारी बोथ होंगे तो सेपरेट ही नहीं होंगे. separate भी नहीं होंगे. So one should be light in weight and another should be heavy in weight, because the thing that is separating is your air. तो एयर से हिलना भी चाहिए. अगर इतना हैवी होगा कि एयर से ही नहीं हिल पा रहा तो हमें वो सेपरेट नहीं कर पाएंगे. राइट? ओके. Now try, let's watch this. Are you able to get it or not? See how threshing and winnowing is done. I just want to just an animation to understand what is a threshing and what is a winnowing. Let's see how it is done. This is called your harvesting. Okay. मैम आई कैन सी इट. Okay. Now this is done manually. मैम लाइक विदाउट अ मशीन राइट. Yes. With this is with a machine. Now see, this is winnowing. That is your chaff and grain.
Got it? How we are doing? Winnowing and threshing. Ma'am, I can't see the video or like the images. Were you not able to see the video? No, ma'am, it is only showing the link. Ma'am, it Is is it? not. Oh, I thought you were able to see that. Just I wait. was just telling you that only that I was not able to see the. Just wait. I show you. Just wait. I thought you were able to see that. No, ma'am. Now are you able to see? Now is it able to see? No, ma'am, it is showing that you have started screen sharing. Yes, ma'am, now it is. Okay. Should I start with the beginning? Okay, Yes, let's ma'am. start with the beginning. This is called your harvesting. Okay, ma'am. Got it? Yes, ma'am. Okay. Is it clear that what is your winnowing? What is so in this we have understood three activities. One is your harvesting, threshing, and then winnowing. Yes, ma'am. Harvesting means cutting the sorry, just wait. Okay. So in harvesting, what we are doing, we are just cutting the green part from the farm. That is called your harvesting. Can you tell me one step has been taught that is called combine? What is combine? Ma'am, when thresher and winnowing. No, ma'am. When harvesting and thresher combined machine. Yes, when the harvesting and threshing are combined. That means you are cutting also, and at the same time, machine is separating the stalk from the grains. Okay, Yes, ma'am. but winnowing is separating from the air. Clear? Yes. Okay. Next. Now, next is your filtration. Can you tell me any filtration technique that you have learned? Ma'am, I'm like. हम्म, ओके आपने कभी अपने घर पे देखा है कि आपके नल में कभी कोई कपड़ा लगा हो No, ma'am. नल में पानी जहाँ साफ ड्रिंकिंग वाटर की जगह आपने कभी देखा हो कहीं बाहर मंदिर में या कहीं जहाँ पानी पीते हैं वहां पे वो कपड़ा टांग देते हैं कपड़ा लगा देते हैं क्यों ऐसा क्यों करते नहीं देखा तो नहीं है. हैं? नहीं देखा कभी ऐसा फिल्टर जैसा लगाया हुआ हो ओके हम्म, आपके घर में पानी साफ करने के लिए क्या करते हैं
मैम आरओ वाटर। आरओ वाटर यूज करते हैं। ऐसी चीज देखी है कहीं? ये दिख रहा है? ऐसा टैप में लगा होता है? नो? नो मैम। नहीं देखा ऐसा टैप में, ऐसा पानी के नीचे ऐसा फिल्टर लगा रहता है? अच्छा कभी देखना, अभी कभी हो तो ट्राई करना कि कभी आप देखना कि कभी नल के नीचे वो कपड़ा क्यों लगाते हैं, ठीक है? या फिर ऐसा देखा है, एक मिनट और देखा, ऐसा देखा है कभी हम पानी के ऊपर कपड़ा या बर्तन के ऊपर कपड़ा रखते हैं? ये मैम ऐसा तो दिख रहा हूँ। ऐसा देखा है ना? तो व्हाई वी डू इट, वी सेपरेट द इम्प्योरिटीज टू गेट द क्लियर वाटर। ओके। ओके मैम। मैम जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्लोथ पे सेटल हो जाती हैं, जो भी वो होता है। यस, जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्लोथ में सेटल हो जाती हैं, और जो साफ पानी होता है वो नीचे आ जाता है। अच्छा हम क्लोथ क्यों यूज कर रहे हैं? हम छन्नी भी तो यूज कर सकते थे, हमने क्लोथ क्यों यूज किया? मैम छन्नी उसमें आएगा ही नहीं, मैम लग ही नहीं सकता। किसमें? मतलब नल में? मैम वो परमानेंटली लगे ना। अ, क्यों, हम अगर छन्नी में डालें पानी तो हमें साफ पानी मिल जाएगा क्या? मैम पर पानी के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वो निकल जाएंगे। छन्नी से भी तो साफ कर सकते हैं। वेरी गुड। पानी के पार्टिकल्स जो हैं, पानी में जो इम्प्योरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा छोटी हैं, हमारी छन्नी के जो छेद हैं वो काफी बड़े हैं, तो वो नहीं जान पाएगा। तो क्लोथ में ऐसा मैम क्या है? क्लोथ में मैम वो ही नहीं है। मैम क्लोथ में वो ही ना। मैम क्लोथ में होल्स नहीं है ना, तो मैम जो भी हैवी इम्प्यूरिटीज होंगी वो क्लोथ से रुक जाएंगी और लाइट वाटर निकल जाएगा। राइट। तो क्लोथ में भी हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके थ्रेड्स इतने आपस में इतने टाइट होते हैं कि उनके जो छेद या पोर्स हम बने उसमें हैं से मैम वो बस बहुत इतना सा स्मॉल मैम है। तो बहुत ही थोड़ा सा निकल सकता है। राइट, वेरी गुड। तो उसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे छेद हैं, इसलिए हमारी इम्प्योरिटीज और सेटल हो जाएंगी अबव, एंड हमारा जो पानी है वो अभी भी नीचे आ जाएगा। पर अगर मैं बोलूं कि आपको बहुत ज्यादा सैंड वाला पानी है, बहुत ब्राउन ब्राउन पानी है, तो क्या वो उससे सेपरेट हो जाएगा क्लोथ से? मैम फिर सेडिमेंटेशन होगी। सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन? अच्छा, सेडिमेंटेशन भी तभी होगी जब वो सैंड पार्टिकल थोड़े मोटे हैं। पर बहुत ज्यादा ब्राउन पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा सैंड वाला है, बहुत पतला पतला सैंड है, फिर क्या करेंगे? हम्म, मैम मेरी मम्मी तो मैम मैंने देखा मैम थोड़ी देर पानी चलने देती हैं, 1-2 मिनट, ताकि जो पानी सारी चल, जो वेरी गुड। गंदा तो पानी होता है वो निकल जाए। वो सेटल डाउन हो जाता है, गंदा पानी नीचे सेटल डाउन हो जाता है और साफ साफ पानी ऊपर आ जाता है। राइट। पर उसकी जगह हम उससे भी और इम्प्रूव तरीका क्या है कि हम उसमें एक फिल्टर पेपर यूज कर लें। ओके, फिल्टर पेपर क्या करेगा? फिल्टर पेपर जैसे आपके पास एक पेपर है, आपने क्या किया, उसको फोल्ड किया और उसका एक कोन बना दिया, लाइक दिस। ओके, उसका एक कोन बना लिया और उसके ऊपर, फनल के ऊपर उसको रख दिया। नाउ यू ड्रॉप वाटर फ्रॉम इट। नाउ व्हाट विल हैपन? this filter paper will take the brown part or the impurities that is not soluble here, and then it takes away the water inside. That means at the bottom you will get the clear water, and यस above you will get the brown part or your impurity. Okay, हम फिल्टर पेपर भी यूज कर सकते हैं, उससे क्या ब्राउन पार्ट बहुत ज्यादा हो जाता है फिल्टर पेपर में, वो थोड़ा कम कर पाएगा, फिल्टर पेपर उसे थोड़ा और ज्यादा कर पाएगा। अब और फिल्टर करना है तो आप, फॉर एग्जाम्पल यू सेड दैट यू आर यूजिंग आरओ वाटर। आरओ वाटर क्या कर रहा है? उसके अंदर बहुत सारे फिल्ट्रेशन टेक्निक्स हैं जो और वाटर को फिल्टर कर रहा है, उसे और साफ कर रहा है, इम्प्योरिटीज और अलग कर रहा है, साफ पानी को और आने दे रहा है। राइट। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ लिक्विड फ्रॉम इनसॉल्युबल, सो व्हाट यू आर डूइंग नाउ, जब आपके पास एक पार्ट सॉलिड है और जो आप फिल्टर करना चाहते हो दैट इज योर लिक्विड, when you have liquid to separate, then we use filtration technique. Okay, now suppose it is a mixture of sand and water. Now what you will do, filtration is used here to remove solid particles from the liquid. Okay, अब मैम। different filtration agents आप use कर सकते हो, जैसे filtering paper, other materials also used। तो जो ऊपर रह जाएगा that is called your residue, जो इसके ऊपर brown brown part रह गया that is called your residue। Okay, and the liquid that you are getting, that is called your filtrate, that is called your filtrate। clear? filtrate, जो हमारे पास साफ पानी है that is your filtrate, and the residue is the impurities that is left behind। तो अब आप जो भी एजेंट यूज कर रहे हो, फिल्टरिंग पेपर
फिल्टरिंग एजेंट मतलब कोई भी फिल्टरिंग पेपर आप यूज कर रहे हो उसके साइज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स इनसॉल्यूबल सॉलिड बड़ा होना चाहिए और फिल्टरिंग एजेंट छोटा होना चाहिए, जिससे आपके पास वो डिवाइस में ही रिटेन हो पाए, नहीं तो वो भी नीचे चला जाएगा। ओके, clear filtration. Yes, Filtration ma'am. is used when we have liquid. Okay, so this is your RO or filter methods to filter the water. One is your cloth filtration, and other is your filter water like RO, AquaGuard that you use at your home. Okay, now next is your loading or coagulation. What is this? Have you heard about alum? Fitkari suna hai? Fitkari. Yes, ma'am. मैम सुना है। Fitkari क्या करता है? मैम एलम ना मैम ऐसे सिलेबस में सुना है कि उसमें Hmm. मैम वो स्पीड अप कर देता है सेडिमेंटेशन को सिलेबस में। मैं फिफ्थ के Okay. सिलेबस में सुना था, बाकी मैम ऐसे नहीं। ओके, बस आपने मुझे बताया कि आपकी मम्मा क्या करती है, उसे सेटल डाउन होने देती है पानी को। तो नीचे नीचे हैवी इम्प्योरिटीज चली जाती है, ऊपर क्या होता है, साफ पानी आ जाता है। पर कई बार क्या होता है, वो इतनी ज्यादा बारीक बारीक मिट्टी होती है उसमें कि वो नीचे सेटल ही नहीं हो पाती। तो हम क्या करते हैं, उसमें एलम डाल देते हैं। एलम क्या होता है, फिटकरी। मैम एलम मैम उसमें ना मैम जैसे पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे जो सैंड के जैसे पार्टिकल्स होते हैं तो उनके साथ मिक्स होके जल्दी नीचे मिक्स हो सेटल जाता डाउन है, हो जाते हैं राइट। और फिर राइट। जल्दी प्रोसेस खत्म हो जाता है सेडिमेंटेशन। यस। तो एलम क्या करता है, एलम सारी इम्प्योरिटीज उसको आपस में चिपका लेता है, जितनी इम्प्योरिटीज होती हैं वो उसमें चिपक जाती है, राइट। तो अब एलम तो हैवी है, अब एलम नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो एलम के साथ सारी इम्प्योरिटीज भी चिपक के नीचे आ जाएगी। यस ओके, पहले क्या था, अकेला था, तो वो ऊपर 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 सारी इम्प्योरिटीज आ रही थी, अब वो एलम के साथ चिपक गया। दैट बिकम्स हैवी। नाउ अगेन हैवी पार्ट goes down because of sedimentation and your pure liquid floats up. ऊपर। Okay, यस so मैम। that is called your loading. This process is loading when it is suspended clay particles and you make them heavy. Okay, now this is also known as coagulation. Both are the same thing. Now the thing that you are using as a for coagulation, that is called your coagulating agent. तो हमारा coagulating agent here यहाँ एलम। पे क्या use किया हमने, alum. Alum means फिटकर. Okay, is it clear? यस मैम। Okay, next is your evaporation. Can you tell me, have you heard about this technique, यस मैम। evaporation? कब करते हैं हम? मैम इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू वाटर वेपर। Water vapor. So what is left behind if you are removing water and making it into water vapor? So what is left behind? Ma'am, like if the particles, ma'am, if the there is a mixture, so ma'am, like if the water flows up, so the mixture will remain. No, ma'am, like Hmm. ma'am, if there is a mixture of like sugar and water or Hmm. like sugar and water, so in evaporation, the water will go up, like Hmm. the water will go up and turn into gas, and sugar will remain in the like sugar will remain like. Hmm. Okay, have you seen at any time sugar will remain? Okay. That is mostly used for salt and water. Okay, mostly used when salt and water. When your water get evaporate and salt will remain inside. Now what you can do, just take a mixture of salt and water and take large amount of salt, not a little 1 teaspoon, 2 teaspoon, not like that. Take a good amount of Because, ma'am, salt salt and and water will water. not be separated from sedimentation, ma'am. It is a Hmm. homogeneous It mixture. will dissolve. It will dissolve in the water, so it will not separate. So when you are taking salt and water and you evaporate by burning it, then what will happen, water will get evaporate and salt will remain. Okay, now you can do one more thing. एक आप एक स्ट्रिप लो, उसमें सॉल्ट वाटर का मिक्सचर आप उसके ऊपर डालो। ओके, उस स्ट्रिप के ऊपर, दैट मीन्स हैवी कोई भी आप कार्डबोर्ड लो और उसके ऊपर उसके सॉल्ट वाटर का पेस्ट डालो। क्या होगा, थोड़ी देर बाद पानी पानी इवेपोरेट हो जाएगा और उसके ऊपर व्हाइट 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 कुछ कुछ चिपका चिपका सा, बाद में जब वो सूख जाएगा ना तो कुछ व्हाइट 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 पार्ट आपको दिखेगा। दैट व्हाइट व्हाइट पार्ट इज योर Salt. सॉल्ट एंड वाटर गेट्स इवेपोरेट। ओके, जब हमारा पानी उड़ जाता है बाय वेपराइजिंग, दिस मेथड is used, evaporation mostly it is used between water and salt. The question
आपको ये मैम एक्चुअली योर वॉइस इज मतलब हमें नॉट उससे क्लियर। जला के उड़ाना है, पानी को उड़ाना है जो लेफ्ट बिहाइंड। इज इट क्लियर नाउ? मैम एक्चुअली योर वॉइस वाज नॉट क्लियर एंड योर स्क्रीन वाज आल्सो पॉजिंग Okay, okay, लाइक योर maybe वीडियो। because of that. Okay, now is it clear or यस it मैम is नाउ happening? इट इज क्लियर योर वॉइस। ओके, तो एवापोरेशन टेक्निक हम तब यूज करेंगे जब हमारा सोल्यूबल सॉलिड है, मतलब जब उसमें चीज घुल जाती है। अभी तक हमने क्या यूज किया था, जिसमें हमारी इम्प्योरिटीज उसमें मैम सेटल मैम डाउन घुल इवेपोरेशन नहीं हम रही। तब भी तो यूज करेंगे ना मैम, जब मैम जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जैसे सैंड एंड वाटर, वो तो सेडिमेंटेशन में भी हो सकता है। यस। मैम पर मैम हम्म। पर जो जैसे मैम वो सेडिमेंटेशन से नहीं हो सकता सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि मैम वो बहुत लाइक हम्म। मैम मतलब यस। मैं समझा नहीं पा रहा मैम पर। हम्म। बेसिकली हमें ये टेक्निक तब यूज करनी है जब हमें हीटिंग के थ्रू मैम वो वाटर को आपस में मिक्स एवेपोरेट हो जाते करना हैं, है। मैम वो आपस में मिक्स मिक्स हो, हो जाते हैं। यस और करेक्ट। मैम वो जो वो वाले पार्टिकल सैंड के पार्टिकल्स हैं वो मिक्स नहीं होते, तो इसलिए होमोजेनियस तब होगा जब हमारे सोल्यूबल हो मिक्स हो जाए, जाएंगे, मिक्स हो मिक्स जाएंगे। हो जाए, सोल्यूबल हो मतलब उसमें घुल यस जाता मैम। है। और जब हमारा नहीं घुल पाता तब तो हम उसमें सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन यूज कर सकते यस मैम। हैं, राइट? और या फिर फिल्ट्रेशन भी यूज कर सकते हैं, पर यस मैम। इसमें तो ऑलरेडी घुल गया है, नमक यस मैम तो पानी मैम नमक मैम चीनी ये सब जो कुछ घुल मैम चुका इसमें है, जो तो घुल हमारा चुका है, वो भी छन जाएगा। ये घुल चुका है ना, तो मैम वो नहीं, इससे हम्म। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से नहीं हो सकता ये। राइट, तो हम जो नमक यूज करते हैं, जो हम नमक बनाते हैं, वो हम इवेपोरेशन टेक्निक से ही बनाते हैं। उसमें क्या होता है, सी के आसपास हम जितने भी जो सॉल्ट पूरा है उसको हम इकट्ठा करके कॉर्नर पे ले आते हैं, फिर उसे रेस्ट होने देते हैं। जब धूप से सारा पानी साइड में उड़ जाता है, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, नमक और उसके साथ कुछ और सॉल्ट, मतलब अलग टाइप के सॉल्ट। फिर वो अलग टेक्निक से हम सॉल्ट और अलग इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर लेते हैं, पर हम उसके पानी को उड़ा देते हैं और नमक नमक साइड में रख लेते हैं। दैट इज यूज सांबर लेक जो है, आपने इंडिया में सुना होगा, राजस्थान में सांबर लेक, वहां पे ऐसा किया जाता है, जहाँ पे आप साइड में सारा सॉल्ट, जो भी इम्प्योरिटीज जो हार्ड थिंग है, उसको आप सेपरेट करके उसके चैम्बर्स बना लेते हो। धीरे धीरे उसका पानी उड़ जाता है और लास्ट में सॉल्ट और उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं। क्लियर? दैट इज हाउ वी मेक सॉल्ट। Okay, use technique is evaporation. Now this is your magnetic separation. Can you tell me what is happening in this? What is magnetic separation? मैम अगर कोई मैम जैसे मेटल या आयरन की चीज हो जो मैग्नेट से स्टिक हो सकती है, और वो किसी चीज के साथ मिक्स हो, तो Very मैम nice. हम उसके ऊपर मैग्नेट रख सकते हैं, जिससे जो मेटल और आयरन की या ऐसे पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेट से स्टिक हो जाए और बाकी रह जाएं जो नॉन मेटल्स हों। Very good. So this method is called magnetic separation. It is used only when you have iron fillings or And it is sulfur used that like can when stick. only the one of the thing is iron or metal. राइट, करेक्ट। तो ये आपने कारपेंटर्स को देखा होगा, कई बार क्या होता है, काम करते करते उनकी सारी जो कीलें होती हैं, जो नेल्स होते हैं, वो सब कुछ घिसाई वाले रेत के साथ मिक्स हो जाती हैं। तो अब उन्हें एक एक करना बहुत मुश्किल है कि हैंड पिकिंग करके वो एक एक कील को ढूंढे। मैम तो क्या करते हैं, मैग्नेट मैग्नेट। यूज करते हैं, सारी मैग्नेट से सारी कील जो होती है उस पर चिपक जाती है, सारी कील कील हमें अलग मिल जाती है। तो ये थोड़ा फास्ट टेक्निक हो गया टू सेपरेट द आयरन नेल्स फ्रॉम द इम्प्योरिटीज, और जो आप रेत कह रहे हो, बूरा कह रहे हो, लकड़ी का जो बूरा है, उससे आप सेपरेट कर पाओगे। वुडन पार्ट नहीं सेपरेट होगा, सारी नेल्स नेल्स एक साथ इकट्ठी हो जाएगी। क्लियर? यस मैम। मेथड इज क्लियर हाउ टू डू? यस मैम। Okay, now can you give me some answer about this? Four mixtures are given below. Kidney beans means rajma, यस and मैम। chickpeas, छोले और राजमा। ठीक है। सेकेंड आपको दिया है pulses and rice. थर्ड is rice flakes and corns. Fourth is potato wafers and biscuits. Now tell me which method is used in method of winnowing. What thing you can separate? What is the correct option? A, B, C, D. मैम बी पार्ट। D part. Sorry, which option? बी। B. B मतलब second and third.
मैम बी बोला बी. B means second and third. Yes मैम, yes. That means second and third. These two you can use by winnowing. Just check. In B, it is second and third. So these two options are correct. When we use winnowing. No ma'am, I'm actually Hmm. one second. Hmm. When we use winnowing, tell me what is the method of winnowing? Do you remember? Ma'am, sorry, 1 and 3, C part. 1 and 3. Okay. Yes. Just tell me why we use winnowing. Ma'am, When we winnowing, use winnowing. ma'am, when winnowing we use when there is like chaff to separate the chaff and grain. So what is the main thing required in winnowing? Ma'am, the main, Two items कैसे होने चाहिए? ma'am, like kidney beans only and like. नो नो, आपने जो शेफ और ग्रेन्स लिए थे उसमें हमने क्या देखा था कि जो शेफ था वो उड़ जा रहा था बिकॉज इट इज लाइट इन वेट, राइट? Yes. वन शुड बी लाइट इन वेट, वन शुड बी हैवी इन वेट. सो किडनी बीन्स, छोले और राजमा, मतलब आपको ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है जिसमें उनके वेट में डिफरेंस हो. अब आप देखो, एक राजमा और एक छोला, उनके वेट में डिफरेंस आ रहा No है? और ma'am, नो, same होगी. सेम. व्हाट अबाउट pulses and rice? Will you blow? Will the pulses will get separated and rice will get separate if you blow by air? No ma'am. No. What about rice flakes and corn? Rice flakes means Rice. आप भेल 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 होती है ना, भेल अच्छा पूड़ी मैम, वाला भेल. मैम उसके मैम कॉर्न की वेट ज्यादा होगी. Hmm. So that means it can work, right? Now, Yes ma'am. potato wafers and biscuits. Can you separate chips and biscuits? Yes मैम, बिस्किट्स की वेट ज्यादा होगी. Biscuit का weight ज़्यादा होगा. So that means third and fourth can be blown off with Yes air, ma'am. right? So which option is correct? D part. D. D is correct. Got it? So whenever it is winnowing, you have to work that which is heavier and lighter. Are they heavier and lighter in weight, the two particles? Okay. Next, consider the following statement and choose the correct option. Statement A is given, a mixture of cement and pebbles can be separated by using a sieve with small pores. B, a sieve with small pores will hold back the pebbles. Are these statements correct or any of them is incorrect? Both are correct, both are false. One is correct, one is false. Which one should be correct? 1 second. Ma'am, statement A is true only. Okay, and what about B? Why it is not true? Ma'am, B is false as. Ma'am, because ma'am pebbles. No, ma'am B is true. Both are true, Yes, right? ma'am, That both. means both are true. Correct. Very good. Actually, I thought that Hmm. will allow pebbles and Hmm. like Okay. opposite. Opposite. Okay. No. So they are telling you that it will hold pebbles and cement will go down. Yeah. Ma'am. Okay. So this is true. Okay. Next, a mixture of salt, sand, oil, and water is given. Which of the sequence can be used to separate salt? Now just think salt. By which method we have separated salt? Salt can be separated by evaporation. Okay, so we have to look any option that is having evaporation. Which option? Ma'am, A and B. A and B is having evaporation. Okay, now that means C is not correct. Now C, can you do these? Which one can be possible? Decantation, what it will separate if we use decantation? Ma'am, decantation sand. Yes, so we have removed sand. Okay, so we are left with oil, salt, and water. Then filtration will be used to separate. Salt Hmm, can be separated by evaporation, hmm, and sand can be separated by decantation, hmm. and
Filtration can Ma'am, be oil used to and separate oil and water. water. Okay, so A part is correct. So Yes. whatever you know it surely, choose that option. Okay, so you know that you can separate salt from evaporation. So just look on those options and just remove, just cancel out. That cannot be possible. Okay, next. Yes, next. A mixture contains three different substances, X, Y, and Z. They are of same size and cubical in shape and yellow in color. Just read by yourself. Just see, are you able to do it? In 1 second, I'll just bring one pen in. This is the last question only. You no need to write anything. You can just do it by simply reading. Just read the question. Ma'am, a mixture contains three different substances, X, Y, and Z. They are of the same size, cubical in shape, and yellow in color. X particles are very heavy, insoluble, non-magnetic, and contribute 50% of the mixture. Y particles are very light, insoluble, non-magnetic, and contribute 40% of the mixture. And Z particles are iron pieces. Which of the following methods can separate X, Y, and Z? Okay. Just tell me if it is given Z pieces. How will you separate Z pieces, Z particles? And by magnetic separation. Okay. So which option is not correct here? Ma'am, Just remove that. D part. D is not correct. Okay. Yes, D is not correct. So you have already separated Z particles by doing magnetic separation. Now what is left? Y are very light, insoluble, non-magnetic. And ma'am, Y can be separated by winnowing. Very good. So which option can be possible? Ma'am, C part cannot be possible. C is not possible. So which is the correct answer? Which sequence is correct? Ma'am, X particles are very heavy, Hmm. insoluble, and non-magnetic. So in A and B only they have changed the Like, order. ma'am, sand, like sand. Hmm. And sand can be separated from sedimentation. No, I'm asking about A. So your only possible option are A and B. So which Yes, option ma'am. is correct? A or B? Will you Okay, do ma'am, first like, winnowing or? ma'am, A part, A part. A part. Okay, but if you do winnowing, then it is not correct. How will you do winnowing? First, you will separate the Z pieces. Okay, then you are left with X and Y. So Yes, when ma'am. you are doing separating the iron pieces, that means first what you have done? Ma'am, first we have done magnetic separation. Magnetic separation. Then we are left with X and Y. Then Yes, in ma'am. X and Y, we are, because why we are not doing X and first winnowing, may be possible Okay, that ma'am, I Z understood. particles Ma'am, are that also light. X can be grains and Y can be shaft. So they can be just separated by winnowing, and Right. Z are iron pieces, so can be separated from magnetic separation. So So first you have to separate magnetic separation. Otherwise, it is also, if it is also light, then by winnowing they can also be separate with X. yes, ma'am, because they Okay. can flow away. Or Yeah. ma'am, So they can be separated. The X and Z particles would mix together. right. So you have to do you have to do magnetic separation and then winnowing. Okay. Ma'am, Clear? but if we first do winnowing,
So the Y particles would be separated and X and Z would mix Yes, together. that you can And do. ma'am, That then you we do can do. magnetic separation. So Separation. the ma'am, like Because here it is the not given magnetic that Z particles are given heavy or not. Okay, that is not given here. So we have just separated by iron pieces by magnet so that we are left with only X and Y. Okay. And if they are giving you any order properly, that first remove Z only, then Y, then X, then also it is very clear. Okay. Is it clear? Yes, How to ma'am. do? Oh, okay, that's all. So just tell me the content that we have read, that the separation methods of different separation, is it clear to you? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Okay. Now today your task is you have to see in the kitchen what type of different filtration, your decantation, sedimentation, how your mother works. मम्मी आटा कैसे छान रही है, आपका फिल्टर घर में पानी कैसे होता है, क्या आप नल में पानी कहीं कहीं देखते हो कि वहां पे कपड़ा लगा है, या फिर चाय कैसे छन रही है, इन चीजों पे आप ध्यान दोगे. ठीक है. Okay, that means you have to go to the kitchen today. Yes, ma'am. Okay. Okay, so I'm ending the meeting. Bye, Tash. Bye, ma'am.